Hello, Vanita, Asha, good morning. Um, am I audible? और बताओ सैटरडे टेस्ट दोगे सब्जेक्टिव नहीं सेकुलरिज्म के ऊपर भी जब मैंने सोशल जस्टिस द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस लास्ट क्वेश्चन मैं पहले बता देता हूँ ताकि आप तैयारी कर लें the concept of social justice. I'll ask question on the idea of justice, the concept of social justice simply. Then I'll ask question on sedition. Then I'll ask question on Article 14. Then question will be या 4-5-6 क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम सेकुलरिज्म के ऊपर होगा क्वेश्चन ठीक है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ऊपर पूछूं आर यू रेडी क्वेश्चन पूछ वन क्वेश्चन ऑन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी only the difference between the Indian parliamentary democracy and the parliamentary democracy in Britain ठीक है ये 4-5-6 क्वेश्चन पहले बता दिया तैयार कर लीजिए अभी टाइम है सैटरडे यू विल हैव टेस्ट ठीक है 2 दिन बहुत है अब क्वेश्चन पहले से पता हो इससे आसान टेस्ट क्या होगा बताओ यस वो खो गई है वो खो गई यस गुड मॉर्निंग अच्छा और भी टेस्ट है क्या टेंशन नहीं लेना है लाइफ में एक काम करना है टेंशन नहीं लेना है नहीं ना मैंने देखा ये खो गई कहीं सर अब तो गया अब तो हुआ पढ़ना पड़ जाएगा so let's start discussion on article 19 किसी का बर्थडे तो नहीं है आज सही में क्या हाँ पार्टी देगी ना चलिए हम पार्टी लेंगे राइट बढ़िया दे देंगे कुछ करेंगे हम लोग या किसी का नहीं आज सही में क्या ओ उसका डेली मनाती होगी सही में तो उसने बोला तो थैंक यू बोला उसने अच्छा कुछ तो एटिकेट्स होना चाहिए सर कि कोई हैप्पी बर्थडे बोलो तो इतना तो रखो उसको थैंक यू बोल दो राइट 7 अगस्त को क्या तो मेरा है तो बहुत टाइम है अभी बहुत टाइम है अभी so we actually in the last class we discussed freedom of 19C तक किया था let's talk about article 19D and 19E both are interrelated right article 19(1)D that is freedom of discussion we have done in the last class right थोड़ा मैं लिखवा दूं आपको एंड रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट जो है मणिपुर में वो आप टेस्ट से पढ़ लेना मतलब नोट से पढ़ लेना राइट लेट मी टॉक अबाउट freedom of movement right article 19(1)D just note down the summary article 19(1)D gives freedom of movement throughout the territory of India article 19(1)D gives freedom to movement throughout the territory of India right however a state can impose restrictions however a state can impose restrictions on freedom of movement
However, a state can impose restrictions on freedom of movement in ecological sensitive area. However, state can impose restrictions on the freedom of movement in ecological sensitive area or for the security or defense. For the security or defense. आर्टिकल 19(4)(5) ना 4 तो हो गया था ना उसके लिए आर्टिकल 19(5) imposed reasonable restrictions on freedom of movement. Article 19(5) imposes restrictions on freedom of movement for on two grounds. Article 19(5) imposes restrictions on freedom of movement on two grounds, namely the interest of general public, the interest of the general public, the interest of general public, like traffic management, and protection of interest of any scheduled tribe. And first is the protection of interest of the general public, like traffic, right? Second, the second ground is to protect the interest of any scheduled tribe. To protect the interest of any scheduled tribe. Right? इसमें थोड़ा और लिख लीजिए. The entry of outsider in scheduled tribe area. The entry of outsider in scheduled tribe area is prohibited. The entry of outsider in scheduled tribal area is prohibited. To protect culture, language, to protect culture, language, customs, and tradition of scheduled tribes. To protect culture, language, customs, and tradition of scheduled tribe. Along with protection of economic interest. Along with the protection of economic interest. Okay. Now, next point you write. The British government imposed restrictions on freedom of movement. The British government imposed certain restriction of freedom of movement British government imposed restriction on freedom of movement on general public in certain areas of Assam. In certain areas of Assam. In the post-independent India, these restrictions was called inner line permit. In post-independent India, these restrictions were called
inner line permit initially three states had ILP status. Initially three states had ILP status. Initially three states had ILP status, namely Arunachal Pradesh, Mizoram, and Nagaland. Initially, three states had ILP status: Arunachal Pradesh, Mizoram, and Nagaland. In 2019, next point, in 2019, Manipur received ILP status. In 2019, Manipur received ILP status. Now, Assam and Tripura are demanding for ILP status. Now, Assam and Tripura demanding for ILP status. Right? Now, which state? Assam and Tripura are demanding ILP status. कल बताया था ILP status, right? You need a certain permit to go inside Nagaland, Mizoram, and Manipur. Now, right? And Manipur में भी वो मिल गया ना, उनको भी मिल गया. Now, Assam is demanding. Now why certain states, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि why certain states demand ILP status. Look at now Assam. Take the example of Assam. Why there is a problem in Assam? Have you heard about Assam? Right, there are lots of migrants in Assam. Right, from East Bengal, from Bengal. Right, not West Bengal. West Bengal से भी है और East Bengal. Look at the 1970 war, 1971 war between India and Bangladesh. Lots of people have migrated from, Bangladesh to also Bengal and also Assam. अब असम में ये प्रॉब्लम हो गया कि there is a conflict between local and outsider here, migrants. Right? Now look at this problem occurred. Why this problem occurs? Because look at what happens. A local has limited land. Right? There is limited land, limited resources, limited jobs. Right? Now when outsider come to that part of territory, now it shares land, resources, everything. Now second problem occurs when outsider come to that area, they are, they becomes ready to work on even the lower wages to survive themselves. Of course, look at the migrants from Bihar or Uttar Pradesh or Jharkhand or Rajasthan in Delhi. They becomes ready to, work in low wages in Gurgaon. For example, look at the Gurgaon. Now the people of Gurgaon who are living from, from generations, they are become very angry on migrants. ठीक है. और फिर दूसरा काम क्या करते हैं ये लोग, जो लोकल म्यूजिक है वो भोजपुरी गाना चला देते. उनको और बुरा लगता है कि देखो एक तो यहाँ पर आके रह रहा है, राइट, हमें जॉब नहीं मिल रहा क्योंकि ये जॉब कम पैसे में कर देता है, हम करेंगे नहीं. लुक एट केरला. एनीवन फ्रॉम केरला? नो वन. ओके, केरला में जॉब प्रॉब्लम लोकल के लिए है, माइग्रेंट के लिए नहीं है. राइट? व्हाई? बिकॉज लोकल हमेशा अपने उसमें रहता है, नहीं होता है. वो एक एरोगेंसी रहती है, लोकल एरोगेंसी वो हर जगह है. राइट? हम इतने में काम नहीं करेंगे. नो, माइग्रेंट क्या करेगा? माइग्रेंट हैज टू सर्वाइव. Right? I went to Kashmir once upon a time and then I saw कि people are working as a labor. I thought कि ये लोकल होंगे. मैंने पूछा कि बोले सर सब बिहार से आए हैं.
मैंने कही बट लोकल बोला है कोई काम नहीं करता लोकल, लोकल सब राजा है। वो 10 रुपए का 20 रुपए का सिगरेट पिएगा, बोलेगा रुक जाओ मैं थोड़ी देर सिगरेट पी के आता हूँ तब काम करूंगा। और ये लोग सर वो पुड़िया फाड़ेगा, मुंह में डालेगा, तुरंत काम करना शुरू कर देगा। सो लुक एट द एफिशिएंसी, राइट। सो दो एफिशिएंटली भी काम करेगा, वेजेस भी कम देने होंगे, और ये हमारे साथ बकवास भी नहीं करेगा, राइट। अब जो लोकल है, जो रिमेन अनएम्प्लॉयड, राइट, उनको तो गुस्सा आएगा, राइट। ऊपर से ये लोग क्या करेगा, शाम को भोजपुरी गाना चला देगा, राइट। वो दिमाग खराब हो जाएगा। लुक एट द हाउ इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन लोकल एंड माइग्रेंट्स टेक्स प्लेस इन मुंबई, in now in Assam, in other places, right? I'm talking about the general, right? Look at Manipur. Look at Manipur, right? In Manipur, Meitei community is dominant, right? And Naga, Kuki, Jomi, all are migrant. They are migrant and they are in minority. The Meitei community live in mainland area, right? And the Kukis are living in hilly area, right? Now, if you look at, now Meitei was demanding ILP. Meitei was demanding ILP. Naga was opposing it. Why? Because there was a migration from the neighboring Nagaland, right? Or Kuki from the neighboring states like Mizoram, like Myanmar. Myanmar to hum illegal keh sakte. We can't allow, right? We can't allow outsider to come to India. But even within migration within the country becomes conflictual. नहीं, that is called also regionalism. Have you heard about the word regionalism? Maratha महाराष्ट्र के महाराष्ट्र मराठू के लिए, right? Have you heard about Bala Sahab Thackeray? Right, he started his movement in 1964, and do you know what was the movement? What was the movement of Bala Sahab Thackeray? सारे जितने साउथ इंडियन है उसको भगाओ. South Indian had occupied good job in Mumbai. Now he started movement throughout the South Indians. They are coming and occupying the most of jobs, right? Now there was a lots of conflict in 1966. Bala Sahib Thackeray formed a party, Shiv Sena. So how party framed, and they won election, right? In 90, that turned from South Indian to anti-South Indian to anti-Bihari and anti-Bhaiya. सबको बोलते भैया, right? Now if you see from 1992 till 2024, now there is a sentiment against the northern Indians, non-Marathi speaking, right? Especially the North Indians भैया, right? If you look at Maharashtra, Nirvan Sena, सुना है? वो कौन सा ठाकरे है उसका, उद्धव ठाकरे का भाई. Now he had become obsolete. Now he's not coming and he's not winning election on that tactics कि हम ऐसा करेंगे, बिहार के लोगों यहाँ से भगा देंगे तो हम इलेक्शन जीत जाएंगे, right? History repeats itself but not the same volume, है ना? You can't become a Bala Sahib Thackeray, right, by repeating the same tactics. Anyway, सबको अलग अलग तरीके अपनाने पड़ेंगे अपने सक्सेस के लिए, सेम तरीका नहीं चलता है, right? So anyway, that becomes a problem. That is a problem in India between migrants and the local. कहीं पर भी है ये problem. Now look at Haryana government actually made a reservation for the local, right? 75% reservation for the local, for the jobs whose remuneration is 30,000 and above, 30,000 and below. अब हरियाणा के लोग 30,000 में काम करेंगे, उनका तो 20-30 हजार रुपए 3 दिन में खर्च हो जाता है, नहीं? उनके तो 20-30 हजार रुपए ऐसे खर्च हो जाते हैं, है ना? तो ये प्रॉब्लम है. एनीवे, तो बाद में बात करेंगे. ये समझ में आया, राइट? सो थोड़ा सा लिखिए तो, देयर इज अ ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट, देयर इज ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट based on regionalism in India. There is always conflict
based on regionalism in India, along with the issue of ethnicity, along with the issue of ethnicity. Right, rest you'll read in society. सोसाइटी का जो पेपर है पार्ट 1, वो ओरिजिनलिज्म वहीं पढ़ेंगे आप लोग, क्यों ओरिजिनलिज्म होता है। मैंने कुछ इशू बताया, राइट, बिटवीन लोकल और आउटसाइडर के बीच में क्या इशू होता है, यू नो द कॉमन रिसोर्सेज दे हैड टू एक्चुअली share. Then there was a cultural conflict between the outsider and the local, right? So these are the two basic, right? And local has always claim over the resources. Now we talk about unity and integrity of India, but we can't allow others to come to and settle down and have same citizenship. The same citizenship means same status. Nahi, there are issues. Anyway, so that is a freedom of movement. Rest you read from the notes. Okay? Now look at Article 19(1)(e). Article 19(1)(e). क्या है? Freedom of residence. Freedom of resettle and reside in any part of India. जहां भी मर्जी हो वहां रह लो, ये फ्रीडम है, राइट। बट उसका अब देखा आपने क्या हो रहा है यहाँ पर, वी अब टॉक्ड अबाउट कि होता क्या है। नाउ लेट मी टेल यू, आर्टिकल 19(1)(d) and E both promotes unity and integrity of India. Article 19(1)(d) and Article 19(1)(e) promotes unity and integrity of India. Why? How? Because it is intermixing the culture, intermixing the people, the languages. Now everyone knows certain languages. सबको थोड़ी भोजपुरी आती है या सबको थोड़ी थोड़ी कुछ आती है, right? Everyone knows 2, 3 languages, 4 languages at least. थोड़ा 2 लाइन तो आता ही है, कितना आता है मुझे 2-4 लाइनें आता है. It happens, right? And this is good. Let me tell you, this is good for ghettoization. Is not good. You know ghettoization? अपने आप को सेग्रीट करके रखना, बिल्कुल वो कुआं में नहीं होता है, वो हाँ कुआं का मेढक अपने वहीं पर उछल उछल के समझता है कि मैं बहुत बढ़िया हूं. It is not. Let's intermix with other, right? Let intermix with other, talk to other, understand each other's culture, right? And that will promote unity and integrity of India, isn't it? Don't you think? Look at Hyderabad, look at the Bangalore. See how North Indians people are living there. Look at Delhi, how many South Indians people are there. Look at Bombay, look at Calcutta. You can find Calcutta is a syncretic city. Syncretic matlab? Yeah, mixture of all culture, traditions. वो सब आपको अफगानी भी मिल जाएगा वहां पर. Originally, yes. ठीक है? Anyway, देखिए Article 19(1)(e), write about this. I was actually just explaining how this Article 1(d) and (e) was actually is promoting unity and integrity of India. Now write about this Article 19(1)(e), freedom of resettle and reside in any part of India. Right, Article 19(1)(e) gives freedom to reside in any part of India. Article 19(1)(e) gives freedom to reside any part of India. This right is intended to remove the internal barriers. This right is intended to remove internal barriers
among communities, and to promote composite nationalism, and to promote composite nationalism. What is composite nationalism? Yeah, it's a mixture, it is a very much healthy nationalism, right? We all are together, right? Right, article 19 1e and d, ऐसे लिखिए, article 19 1d and article 19 1e promotes unity and integrity of India. Article 19 1d, article 19 1e promotes unity and integrity of India. However, state can impose reasonable restrictions on two grounds. However, state can impose reasonable restrictions on two grounds. However, state can impose reasonable restrictions on two grounds. First, to protect the interest of general public. To protect the interest of general public. इसका उदाहरण, what can be the example? For example, you have tried to settle in certain area which is useful for the national highway. अब स्टेट कहेगा कि यहां से हटो, उधर चले जाओ. That state can do. होता है ना? For expressway, for making dams, right? People are displaced. This does happen. This does happen under this clause. Okay, second लिखिए. Second, to protect the interest of scheduled tribe. To protect the interest of scheduled tribe. To protect the interest of scheduled tribe. अब देखो डी और ई में ना सेम प्रोहिबिशन है, दोनों में सिमिलर है. देयर इज नो डिफरेंस. राइट, आराम से पढ़िए. राइट, हाँ छोड़ सकते हो शेड्यूल ट्राइब. पहले जो नोट्स दे रहा हूं ना हर सब चैप्टर का, उसको करो. उसको एक चीज को तो करो ढंग से, एक ही करने में टाइम लगेगा. राइट, डन. नाउ राइट to article 19 1g. 19 1g, right to profession. Right to profession. Now, if you look at Article 19(1)(g), gives right to profession in anywhere in India. पहला था घूमने का, दूसरा था रहने का, तीसरा है कोई भी काम करने का. Now, आप कोई भी काम नहीं कर सकते. आप मान लो कल बोलोगे कि मैं सर नोट छापूंगा, you can't do that, right? और कल बोलोगे चलो आज ऐसा करते हैं हम लोग गन बना लेते हैं, उसी को बेचते हैं. No. Then certain profession is monopolized by the state. You cannot do it. Like currency or like gun or weapon, you can't make it. चंदन की लकड़ी बेच देना. Yes, वो था ना, तमिलनाडु का था ना पुष्पा, तो वो अब की बात है. There was one dacoit. He lived in Birappan. Have you heard of Birappan? He had been killed. या बहुत बड़ी स्टोरी है बीरप्पन की. So you write Article 19(1)(g) gives right to practice any profession. Down. Article 19(1)(g) gives right to practice any profession. Right to practice any profession
or carry any occupation, trade or business. Right to practice any profession or to carry any occupation, trade or business. It includes right to livelihood. It includes right to livelihood. Right? A state can impose restrictions only for the interest of general public. A state can impose restrictions only for the interest of general public. Certain professions are monopolized by state, like making weapon. Certain professions are monopolized by state, like making weapon. नहीं, जनरल इंटरेस्ट जनरल पब्लिक के लिए ट्राइबल एरिया में जाके क्यों नहीं कर सकते? आप मान लो आपको डॉक्टर ही करना है, क्यों नहीं जाके कर सकते आप? जनरल इंटरेस्ट के लिए नहीं जाएंगे। आर्टिकल 19(1) में है, सॉरी डी और ई में है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब। बट कुछ प्रोफेशन करना है, मान लो कि आपको टीचिंग करनी है, यू कैन गो टू ट्राइबल एरिया एंड कैन डू दैट, राइट? और यू कैन, इफ यू आर अ डॉक्टर, यू कैन गो एंड ट्रीट देम, राइट? हैव यू हर्ड अबाउट विनायक सेन? नहीं? Vinayak Sen used to stay in Germany. He was a doctor, Indian doctor. He was from Chhattisgarh, and he thought कि एक दिन दिमाग में आया, 60 साल के हो गए, क्या करते अब चलते अपने, let's go back to the, you know, the land where I born. And he came to Chhattisgarh and he started treating everyone. Doctor, doctor is a doctor. He can't speak you are a criminal or you are this or you are that, you are that. Now, later on, he was accused of Nakshal, right? And his bail was denied multiple times, right? And there was a elite movement. Of course, he was a doctor. All doctor had some little sympathy, right? And when the professionals had certain sympathy, now he had been bailed by the court later on after 3 or 4 years, and then the Congress government included him in the National Advisory Council, right? So he was a member of the National Advisory Council later on, after spending 5 years in jail. Anyway, last month ko recognition mila. Yeah, now let me tell you one thing. If you see, Article 19 is available to citizens only. What does it mean? कि क्या जो फॉरेनर है उनको राइट टू प्रोफेशन नहीं है इंडिया में? तो अमेजन कैसे काम कर रहा है? नहीं बाबा, कोई भी प्रोफेशन, यहां पर गवर्नमेंट जॉब लिखा है क्या? खुद से नहीं लेना है, आपको वर्ड को कैच करना है, पकड़ना है. Carry out any profession, trade or business. How foreigners, multinational company do their profession? See, let me tell you, they do actually foreigner do profession under Article 301, subjected to restrictions under Article 302 to 305. जो भी MNC foreigner है ना, they have right to trade under Article 301. So right, एक लाइन लिखिए. Article 19(1)(g) gives right to trade or profession to citizens only. Article 19(1)(g) gives right to freedom of profession to citizens only.
The foreigners and multinational companies, foreigners and multinational companies have right to trade and business in India. The foreigner, and multinational company have a right to trade or business in India under Article 301, subjected to restrictions mentioned under Article 302 to 305. ना याद कैसे रखोगे आर्टिकल, हाँ, बट याद बार बार पढ़ोगे तो याद होगा. एक बार तो पढ़ो और 2 बार आईना के सामने किसी को पढ़ाओ, देखो याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है जब मैं बोल रहा हूं तब. Under Article 302 to 305, they have right to freedom of trade and business under Article 301, but there are certain restrictions under 302 to 305. Right? So look at right to property is not subject, not given to Indians India. It is a legal right to non-foreigners also. आप इसकी प्रॉपर्टी अभी छीन नहीं सकते. अगर छीना जाएगा, now Supreme Court will come. There will be legal action. Now right to property is a legal right or constitutional right for common people. एक चीज और बता देता हूं, कभी कुछ लिखा रहे कि whether it is a legal or constitutional, जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू वोट है. अब एक बार क्वेश्चन आया था, राइट टू वोट लीगल राइट, सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, तीसरा फंडामेंटल राइट, राइट, चौथा आया था मान लो नेचुरल राइट. अब क्या होगा, क्यों क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल होगा? स्टेट लोग ये पहले ये ब्लंडर है, ये क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन इज समथिंग लॉग, इट हैज नॉट बीन चैलेंज्ड, but this question could have been challenged. No, legal also. Yeah. Look at the RPA Act 1951. It is a legal rights also and constitutional rights also. Both are correct. But हुआ क्या कि जो UPSC ने आंसर दिया वैसे ही होगा, दादाजी बोलेंगे वैसे ही होगा. That was legal rights. आपको बताया मैंने, legal rights are the rights provided by the law. Constitutional rights are the rights which is provided by the Constitution. Right? Article 326 also talks about no person can be discriminated, to give to vote on the basis of race, caste, religion, whatever. So constitutional भी है और legal भी है. ठीक है? So basic under किसी ने ये मारा होगा, अब उसका गलत हो गया, वो कितना, right? नहीं ऐसा पूछता नहीं. It was the first time. हाँ, सी फ्रीडम. आप देखो एक मिनट, वो पूछता है इन इंडियन पॉलिटी. सुनिए, अच्छा वो अगर पॉलिटी भी पूछता तो इंडियन पॉलिटी है. इन इंडियन पॉलिटी इक्वालिटी रेफर्स टू दिस और लिबर्टी रेफर्स टू दिस. ठीक है, तो आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मारेंगे. लिबर्टी इन इंडियन पॉलिटी इज नॉट एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट. या लिबर्टी refers to the opportunity, to develop your own personality, your own self, become a good person. There are several restrictions within the Constitution. अभी बताया मैंने Article 19(2), there are several restrictions on freedom of speech and expression. Article 19 Clause 3 imposes 3 restrictions on right association, union. Article 19 Clause 4 puts restrictions on right to movement. Article 19 Clause 5 puts restrictions on Article 19 1D and E. Right? Article 19(6) puts restrictions on right to profession. पहला क्लास में यही तो डिस्कस किया था पॉलिटी में. हाँ, नॉर्मल अगर हम सिंपल बात करेंगे कि लिबर्टी का क्या मतलब होता है, तो एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट होगा. बट जब वो इंडियन पॉलिटी की बात कर रहा है, मैंने इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा है, आपको प्योरली वही जो बेयर एक्ट है ना वही पढ़ना है. इतना जो एक्सप्लेन करके पढ़ रहे हैं क्योंकि उसी बेयर एक्ट को हम ना छोटा छोटा करके उसको छोरा छोरा करके आपको बता रहे टुकड़े टुकड़ों में.
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आपको पढ़ना है, राइट? पॉलिटी इज अ big word, right? Polity includes constitution also the way of life, also the law, ठीक है? Also the set of rules and regulations that you know supposed to administer the behavior of citizen, ठीक है? शांत, क्लियर हुआ? हाँ हाँ करो। आंसर किल मिल जाएगा, आज मैं दे दूं। आज सैटरडे थे या सैटरडे या मंडे को आपको वो मिल जाएगा आपका पेपर, राइट? आज मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं। पॉलिटी लिखा है ना, आप यही मारिएगा, टू डेवलप वन सेल्फ। जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको टेक्स्ट यूपीएससी में, वो इंडियन पॉलिटी के हिसाब से ही पूछा जाता है, ठीक है? राइट, हाँ, गॉट द आइडिया? नाउ one more line you write, article 19(1)(g) also includes, हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी है, लीगल राइट्स भी है। कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज अ बिग लीगल डॉक्यूमेंट। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल मानेंगे। अब कहीं अगर आए तो कॉन्स्टिट्यूशनल ही लगाना है, ठीक है? अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है तो कोई भी, उसने कौन सा राइट टू प्रॉपर्टी की बोला कि ये लीगल राइट है, और हर जगह आप पढ़ेंगे इट इज ए लीगल ट्रांसफर, नाउ इट इज ए लीगल राइट। अब क्वेश्चन आ सकता है कि ये लीगल राइट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि फंडामेंटल राइट है कि नेचुरल राइट है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पे क्लिक करेंगे। What the idea? The rights which is discussed in the constitution can be called constitutional rights. Now, what is fundamental rights? The fundamental rights are justiciable, but constitutional rights are not justiciable. Right? You have to approach from the below, the subordinate court. है ना? So property उसमें पड़ता है। Even right to vote अगर मान लो नहीं दिया जाता है, you have to approach the lower court. Lower court, not higher court. Lower court first, then you proceed. ठीक है? बोलो। राइट, देखो राइट्स ओवरलैप होता है। राइट टू लाइफ नेचुरल राइट भी है, फंडामेंटल राइट भी है, दोनों है। ये ह्यूमन राइट्स भी है, समझ में आया? राइट टू लाइफ है, इट इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट, इट इज इसेंशियल ना, इट इज सेफ गार्डेड। नेचुरल इसलिए है कि राइट, नेचुरली वी ऑल आर ग्रोन, वी ऑल आर बोर्न, राइट? वो जो फिलॉसफी चली गई कि भगवान ने जन्म दिया, राइट? फिलॉसफी हैज चेंज्ड अ लॉट, ठीक है? बहुत लोग मानते, जो इतना डिवाइन राइट थ्योरी में बिलीव करते, वो तो मानते भगवान तुमने जन्म दिया, अब ले लो तुम, कुछ दो मैं खा लूं, बस खत्म, राइट? ठीक है, चलो। हाँ, राइट टू राइट लिखो आर्टिकल 19(1)(g) includes, article 19(1)(g) includes profession of right, includes profession of right to be a sex worker. Profession of right to be a sex worker. Yeah. The Supreme Court under Article 142, the Supreme Court under Article under Article 142 declares sex work as a profession. Under Supreme Court under Article 142 declared sex work as a profession. To do complete justice. To do complete justice. Now look at Article 142.
आर्टिकल 142 is about कंप्लीट जस्टिस। अब बोलोगे सर सब कुछ सुना था, ये कंप्लीट जस्टिस नया टर्म कहां से आ गया? नेचुरल जस्टिस सुना, सोशल जस्टिस सुना, राइट, और क्या इकोनॉमिक जस्टिस सुना, पॉलिटिकल जस्टिस, ये कंप्लीट जस्टिस क्या है? नाउ इफ यू लुक आर्टिकल, द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 142 empowers the Supreme Court to even nullify the any law of the land, any law of the land, right, or any executive power in order to do complete justice. Now complete justice you can find with the concept of natural justice, right, the fairness, with the fairness. कौन से? मैंने उसको जजमेंट को पढ़ा नहीं, तो मुझे नहीं पता, अगर आप हुआ है तो आप बताएं। बहुत सारे केस है, बहुत सारे केस है, बिल्की बानू का केस है, राइट, और ये केस है, देन देयर आर मेनी केसेस। आप जुडिशियरी पढ़ेंगे तो बहुत सारा केस आपको बताएंगे, राइट, देयर आर मल्टीपल केसेस व्हिच इज एक्चुअली डिलीवर्ड अंडर आर्टिकल 142, द कंप्लीट जस्टिस, राइट। अब होता क्या था, लुक एट द सेक्स वर्कर, उनके पास भी बच्चे होते थे, अब पुलिस उसको परेशान करती थी, तुम्हारा ये बच्चा कहां से आया? उन पुलिस को लगता था कि दिस इज द चाइल्ड इज समहाउ ट्रैफिक्ड, राइट, एंड पुलिस यूज्ड टू हरास सेक्स वर्कर, right? Why? Because the right to sex work was not a right under Indian constitution. Now Supreme Court said, to elevate, to do some fair with the sex worker, Supreme Court recognized article, sex work as a right to profession under article 19(1)(g). Got the idea? So that executive power cannot, harm sex worker. कुछ चीजें नहीं मानने से तो नहीं होता, वो है नहीं, है ना, हम मान ले कि ऐसा नहीं है, बट ऐसा एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल बहुत लोग मानते कि चलो कास्ट सिस्टम में क्या बिलीव करना, कास्ट सिस्टम कुछ नहीं है, राइट, दिस इज अ फीलिंग ऑफ द प्रिविलेज्ड कास्ट, बट देयर इज अ कास्ट सिस्टम, देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन, राइट। एनीवे, सो वी हैव डन आर्टिकल 19, बस एक आर्टिकल हमने 3 क्लास में किया है, राइट, ठीक है, नहीं टाइम लगता है इसमें, आर्टिकल 22 तक टाइम लगेगा, ठीक है। समझ में आया? जो नहीं समझ में आया पूछो, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क, कुछ कंफ्यूजन रह गया हो, कुछ पूछना हो? क्या? हाँ, गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, जॉब को काट के गवर्नमेंट एम्प्लॉय लगा दो। One minute. The Supreme Court held that government job cannot take away the fundamental right to freedom of speech and expression. They can speak something which includes right to initiate, participate in demonstration. Okay, so in this case, Supreme Court held that the participation in the demonstration or protest is a fundamental right. इससे निकल के ही आ रहा है ना? या हाँ, या ये कहना चाहता है किसी, if you have received a government job, it does not mean your fundamental right has been abolished or curtailed. You have right to freedom of speech and expression, including right to demonstration, not a strike. But later on, Supreme Court struck down this, right? वो कोई बेयर एक्ट है, देना जरा, give me your बेयर एक्ट. This was article freedom of assembly, na? Now we don't have a right to strike. The government employee don't have a right to strike.
Yeah, look at the Carnage Fatima versus Commissioner of Police 2021. Three-judge bench upheld decision of the Amit Sahni versus Commissioner of Police and further held that right to protest cannot be at any time and anywhere. It was about right to protest in general, right? And the right to protest for the government employee is also not allowed. पेज नंबर है 37. पेज नंबर 37. ये लो. So right to protest for government employee is not allowed. Right to strike is not allowed. नहीं, ये कामेश्वर प्रसाद अलग है भाई. मैंने कामेश्वर सिंह लिखवाया था क्या? कामेश्वर प्रसाद लिखना. हाँ, अलग अलग है भाई. Of course, कामेश्वर सिंह was a जमींदार. कामेश्वर प्रसाद was some government employee. हाँ, वो पटना हाई कोर्ट, वो अलग है. ये कामेश्वर प्रसाद is a different case. कामेश्वर सिंह was a different case. कामेश्वर सिंह was related to the land reform law. Should I move then Article 20? कल टाइम हो गया क्या? नहीं, टाइम नहीं हुआ अभी तक. टाइम है भाई, टाइम है. समझा देता हूं थोड़ा सा. किससे? टेक्स्ट में से. टेस्ट में से पूछो. टेस्ट ना, वी विल डिस्कस इट. हाँ, डिस्कस करेंगे सब. बहुत लोगों ने अच्छा किया है, आई हैव सीन, बट मैंने अभी तक वो नहीं दिया, आंसर नहीं दिया. वंस आई विल गिव आंसर, आई विल गिव टुडे, राइट? दे विल चेक एंड विल गिव टू यू. ठीक है, फिर हो सकता है उसी को डिस्कस करें जो आपसे नहीं बना. ठीक है, जो आपको गलत हो गया आपका. Article Selvi versus, yeah. Article, yeah. Let's discuss Article 20, right? Article 20. Basically, Article 20 gives right, against certain offenses, right? It gives certain rights against offenses. रख देना. Rights in case of conviction, in case of rights of person in case of conviction. In offenses. Now, if you look at Article 20 gives you three rights. Article 20 gives you three rights. First is called no post facto. Post facto law. Now, what does it mean? It means if certain commissions, certain act is not an offense at the time of commission. मान लो आज मैंने कुछ किया, but that is not an offense in the law. No future law can make that, action as offense, right? मान लीजिए आप इसने कुछ भी, मान लो कि हवा में उड़ गए. हवा में उड़ना अभी तक क्राइम नहीं है. मान लो किसी ने अपना जुगाड़ किया और हवा में उड़ गया. नाउ वो ज्यादा हो गया, बहुत लोग उड़ने लगे, क्लास होगा. तो अब क्या होगा कि लॉ बन जाएगा, राइट? जब तक लॉ नहीं बनेगा तब तक वो क्राइम नहीं है, राइट? यस, आफ्टर दैट क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ नहीं, क्रिमिनल लॉ, ओनली क्रिमिनल लॉ, राइट? यहां पर ऑफेंस लिखा है, राइट? ऑफेंस का क्या मतलब है? व्हाट इज मीनिंग ऑफेंस? या ऑफेंस का मतलब है वायलेशन ऑफ लॉ. कोई भी हम क्राइम करते हैं तो हम लॉ को तोड़ रहे होते हैं, वेदर बाइक चला रहे हो, राइट? या हम शादी कर रहे होते, होता है ना,
right? You cannot marry below the age of 18. तो एक्ट बन गया क्या? अब तो तुम्हारी अब 28 में होगी या 30 में होगी तो उसका कोई, हाँ अब 35 भी चला जाता है, 40 देखो, सलमान खान देखो क्या है, ठीक है, एनीवे उनका पर्सनल मैटर है ना, हम क्यों डिस्कस करें, एनीवे। सो नो पोस्ट फैक्टो लॉ क्या है कि लॉ कैन नॉट बी यूज्ड इन रेट्रोस्पेक्टिवली। एक एग्जांपल बताता हूं, निर्भया केस का सुना है? निर्भया केस में देयर वाज अ 5 accused. One accused was minor, 17 years का था। अब ये डिमांड था कि ये 17 years का है तो इसको ना ऐसा करो कि दिस माइनर शुड बी कंसीडर्ड एज अ एडल्ट, राइट? लॉ बना बाद में, जो बना जस्टिस एक्ट 2015, and that made a law that any person, right, who are between 16 to 18, but if they have done heinous crime, that minor shall be considered not minor but adult. But that law cannot be implemented on निर्भया accused. उनको माइनर ही माना जाएगा और माइनर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। आपको पता है बहुत लोगों को, एक तो मर गया ऐसे, फांसी लगा लिया जेल में, three had been already hanged and this minor is staying in jail, right? उसको नहीं, that minor had not been considered as a adult. If the minor would have been considered as adult, the minor would have been, received hanged, the capital punishment. समझ में आया? और कठुआ रेप केस, have you heard about कठुआ रेप केस? Right? They post, there was after the Kathua, there was a strict law, right? Raping a minor is a deserved death punishment, capital punishment. Now, but that law cannot be implemented in the, Kathua rape accused. समझ में आया? Right? So, if any action is not a crime today, right, the future law cannot make it crime. That is a no ex post facto. Got the idea? समझ में आया? No ex post facto law. Law cannot be used retrospectively in crime. Civilian law can be. Civilian can be. मान लीजिए कल गवर्नमेंट ने कोई टैक्स से रिलेटेड लॉ बनाया और कुछ लोगों ने इवेड कर दिए टैक्स, that can be implemented in the past, right? Criminal law cannot be implemented in the past. It can be implemented in future, right? Now, second is called double jeopardy or no double jeopardy. एक मिनट आ रहा हूं, बोलिए। सॉरी, हाँ, आफ्टर निर्भया, इफ कोई भी माइनर अगर if he is involved in heinous crime, but any minor who are between 16 to 18, right, उनका जो एज है 16 to 18, but if that person is involved in heinous case, then that minor can be considered as a adult, right? ये मैंने कब का बताया आपको, जे एक्ट 2015, ये फिर से अमेंडमेंट हो गया है 2018। उसमें क्या हुआ? उसमें ये हुआ, यहां पर क्राइम 3 भाग में डिवाइडेड है, यहां पर क्राइम को 2 भाग में डिवाइड कर दिया, राइट? अब क्या है कि एनी क्राइम which attracts punishment more than 7 years can be called the serious crime. यहां पर ये हटा करके एक सिंपल क्राइम एंड सीरियस क्राइम कर दिया, and in the serious crime this is applicable. What is serious crime? A crime whose punishment is more than 7 years. जो बना जस्टिस एक्ट जब गवर्नेंस में करोगे तब उसको पढ़ना पड़ेगा ढंग से। अच्छा, नो डबल जियोपार्डी क्या होता है? या हाँ, एक क्राइम को 2 बार पनिशमेंट नहीं हो सकता, राइट? समझ में आया? राइट, वन टाइम क्राइम, वन टाइम पनिशमेंट. No person can be, punished twice for the
same offense, same crime. Huh? Everything included. Everything included. Right? Basically it deals with the criminal. Civil में भी नहीं मिलता है. Right? Now second is no self incrimination. No self incrimination. इसका क्या मतलब है? हाँ, no person can be witness, no person can be witness in his or her own crime. मान लीजिए तुमने किसी को छुरा मार दिया और वहां पर कोई नहीं है और पुलिस ने क्या किया, तुम ये एक्सेप्ट करो कि तुमने छुरा मारा है, राइट? तुमने कह भी दिया कि ठीक है मैंने मारा है. उसने बोला लिखो यहां पर, तुमने लिख भी दिया, ओके आई हैव डन क्राइम दिस. Now that writing cannot be taken as evidence, and your statement in front of police cannot be taken as a evidence in you. But let me tell you, if your writing given on the paper led some discovery of any material, तुमने लिखा कि यहाँ चाकू वहां रखा, यहाँ रखा पूरा, अगर चाकू मिल गया फिर गया, पुलिस कर दे. देखो कुछ ट्रूथ और अनट्रूथ में थोड़ा सा डिफरेंस है. अगर पुलिस कर सकती है, देयर आर मेनी पीपल हु हैव बीन प्लॉटेड, राइट, इन सर्टेन क्राइम. ड्रग्स रखवा दिया, सब कुछ रखवा दिया, बोला लिखो, राइट? नाउ बट देयर योर लॉयर हैज टू प्रूव. अदरवाइज जो आंटी है, वो जो तराजू लेके खड़ी है, वो अंधी है, मतलब शी डज नॉट नो एनीथिंग, ओनली एविडेंस. न्याय की जो देवी है वो देखती कुछ नहीं है, वो बस सुनती है, राइट? और उनको आप बताओ कि यू आर इनोसेंट, यू हैव टू गिव प्रूफ. जज हैज नो बायसनेस, राइट? जजेस हैव नो बायसनेस. जजेस केवल एविडेंस देखता है जो भी. एंड लेट मी टेल यू, it's not that the innocent people are not in jail. There are many people innocent who are in jail because they are not able to hire a good lawyer, right? होता है ना, बहुत लोग ऐसे बुरे, मतलब ऐसे, मतलब क्या बोलते, फेक केस में वो करके उनको, राइट? तो उसका कुछ नहीं है. यू हैव टू बी थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, ये लॉयर अच्छा रखना पड़ेगा. Yeah, so what is no self-incrimination? No self-incrimination means no person can be taken as witness in their own crime or any crime, right? That is called no self-incrimination. That is a free protection given to the any person, citizen, non-citizen. Citizen के लिए मात्र 5 है. आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, इसको 5 बार बोलना. अदरवाइज सारे आर्टिकल, ऑल आर्टिकल्स आर अवेलेबल टू एवरी पर्सन. एलियंस को नहीं है. यस, अब एलियंस कौन है? वो जो धूप खाता है, वो देखा नहीं? धूप, जादू. Have you watched जादू? Yeah. This was the first movie I watched, first show. It was the first movie, मतलब in my life, and the last movie. उसके बाद फर्स्ट शो मैंने कभी नहीं देखा जादू. या एनीवे, ठीक है. तो अच्छा, तो एलियन का क्या मतलब है? एलियन का मतलब वो जादू है जो आर्टिकल 22 में लिखा हुआ है. वो जादू नहीं है. एलियन मीन्स एनी पर्सन हु एक्चुअली क्रॉस द बॉर्डर नॉट नॉन टू दिस कंट्री. हाँ, और एक टर्म है, अ पर्सन ऑफ एनिमी स्टेट और एनिमी, राइट? सीमा हैदर को लोग ये भी मानते थे ना कि एनिमी है, सी इज टेररिस्ट और आईएसआई एजेंट. और आई एम नॉट फॉलोइंग दैट केस एक्चुअली. ऐसा नहीं है. अब देखो, प्यार जहां ना ले जाए. अब एक इंसान यहां से वहां गया. देखो ऐसे जो ना आप रोक, ये जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर इज ए वेरी रिसेंट फेनोमेना. बॉर्डर में लोगों को बांध देना, उधर से उधर नहीं जाने देना, इधर से उधर नहीं आने देना, बॉर्डर के लिए लड़ाई करना, इट्स वेरी रिसेंट फेनोमेना.
100 साल की कहानी है। पिछले 100 साल से, ये 100-150 साल पहले की ये कहानी शुरू हुई। ये मेरा देश, ये तुम्हारा देश, ये तुम्हारा बॉर्डर, हम नहीं जा सकते, तुम नहीं आ सकते, कितनी लड़ाइयां हुई इस बॉर्डर को लेकर के, राइट? पीपल हैव बीन माइग्रेंट फ्रॉम हियर टू देयर, देयर टू देयर, देयर टू देयर। अब बताओ ना, जो आज मैं दिल्ली में, क्या मेरे पूर्वज रहते थे? नहीं रहते थे, राइट? वो कहीं और रहते, उनके पूर्वज वहीं रहते थे, नहीं रहते थे, वो कहीं और रहते थे, राइट? ये तो इंसान का नेचर है, राइट? वो माइग्रेट करते हैं। बर्ड माइग्रेट कर जाता है। हैव यू हर्ड माइग्रेटरी बर्ड? वो रसिया से आ जाता है, साइबेरियन, या साइबेरिया से यहाँ आ जाता है। एनीवे, ऐसा नहीं कि सब आ जाएंगे, सारे बर्ड दुनिया के आ जाएंगे हमारे घर में, हमारे देश में। हम बर्ड को कैसे कंट्रोल करेंगे? कबूतर तो सही में इट इज अ menace, right? In Delhi it is a menace. Everywhere you go, everywhere, you know, अरे भाई साहब पूछो मत, हर जगह टट्टी करके हालत खराब कर देता है ये पिजन, या। और जहां मेरा घर है, ये लोग बेचते हैं, लोग पीपल खूब खाते हैं वहां, उसको ट्रेड होता है। हाँ, लोग पालते हैं बेचने के लिए। इट इज डोमेस्टिकेटेड, इट इज अ पेट बर्ड इन बिहार, वेयर इट इज सोल्ड एंड बॉट इन द मार्केट। जो whatever, वो आर्गुमेंट अगेंस्ट और फेवर, दैट इज डिफरेंट, राइट? बट जब देखो अपने दिल्ली में हर कॉलोनी, हर कोने, हर चौराहे पे कुछ नहीं मिलेगा, पिजन जरूर मिलेगा, राइट? आप सो रहे हो, वो दरवाजे पे, वो खिड़की पे खड़ा होके 5 ऐसे करेगा कि बस। एनीवे, डिड यू गेट द आइडिया ऑफ 20? अच्छा, एक चीज मैंने आपको बताया कि इफ a person has given a statement, when I give me 2 minutes, I'll wrap it up. If you know any person gives any statement in front of police, they cannot be taken as a evidence, right? तो पुलिस अगर अरेस्ट करती है, आर्टिकल 20 ऐसा, 22 ऐसा है, 20 और 22 कॉमन लाइफ से बड़ा एसोसिएटेड है, और इसीलिए अच्छा इंटरेस्ट लगेगा। If someone has given written statement in front of police, right, or to the police, that cannot be taken as evidence, right? But if someone has given, you know, written statement in front of magistrate, then that written statement can be taken as a evidence. Now if someone has given written statement in front of police, but that statement led to some recovery of any item, then the statement can be taken as a evidence. Got the idea? Now there are certain law within which a written statement can be taken as evidence, like Gujarat Crime Control Act, or have you heard about MCOCA, Maharashtra Organized Crime Control Act, or right? So under this law, this is a special law. Under this law, if police arrest you and if you have given any statement, that can be taken as a evidence. Jolly LLB movie देखी है किसी ने? हाँ? तो right. जॉली एलबी और जॉली एलबी दो है ना? दो है, एक पहला वाला और एक सेकेंड वाला। तो फर्स्ट वन इज ऑल्सो गुड, सेकेंड वन इज ऑल्सो गुड। किसने बोला? नो। ओहो, वेब सीरीज में पढ़ा रहा हूँ लॉ। See, if you have given a written statement, you have signed, you have given even fingerprint, that cannot be considered as a evidence in front of magistrate. ठीक है? And I'll tell you the DK Basu, I'll give you 1 pages to everyone to know your rights, legal rights, right? If you are arrested, what are rights you have? So Article 22 जब पढ़ाऊंगा तब, या DK Basu versus State of Bengal केस जो है, वो मैं उसका 1 पेज पूरा दूंगा, एक what rights an arrested person has.
राइट वो बस स्पेशल पेज में हर क्लास में देता हूं ताकि यू कैन नो अबाउट योर राइट्स एटलीस्ट व्हेन समवन इज अरेस्टेड, व्हेन यू आर अरेस्टेड। ठीक है, लॉयर से क्यों पुलिस वाले डरते हैं? क्योंकि उसको पता है कि इसको सब कुछ पता है, भले ही काला कोट लेके चले जाओ उसको, फिर वो लॉयर पुलिस वाला सही हो जाएगा। बट आप जाओ, देखो पुलिस वाला का एटीट्यूड क्या है। हैव यू फेस एवर पुलिस वाला, राइट? नहीं पता कहां जा रही है, कहां, घर कहां? तो हरियाणा में कहां? बेईमानी। अच्छा, तो सदा के लिए, तो 5-6 महीनों के लिए तो मिल जाएगा आपको, इनसे ले लीजिएगा। ये दे देगी, नहीं देगी, वो अपना तुम दोनों का है, या इट विल बी अपलोडेड, डोंट वरी, इट विल बी अपलोडेड इन दैट केस। सो इसको हम कल लिखेंगे, राइट? नोट डाउन, कल करेंगे। यू हैव टेस्ट दिस सैटरडे on thematic subjective test, very much subjective test, you attempt it, time limit भी रहेगा, और टॉपिक बता दिया, सेक्युलरिज्म, राइट टू इक्वालिटी, सेडिशन, राइट टू फ्रीडम। हाँ, राइट टू इक्वालिटी केवल 14 से नहीं चलेगा काम, मैंने इतना 15 क्लॉज 3, 4, 5, 6 पढ़ाया, उसका क्या, व्हाट इज यूटिलिटी ऑफ दैट रीडिंग? There will be test on secularism, right? Parliamentary democracy, social justice, sedition, ये सब। हाँ, so see you tomorrow, ठीक है? Hi आशा, वनीता, see you tomorrow। जितना डेली पढ़ रहे हो, जितना भी पढ़ रहे हो, उसको ढंग से उस दिन पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि उसके बाद